नमस्कार। आज 3 जुलाई 2022 संडे को राउंड टेबल एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ एनवायरनमेंट जो डॉक्टर के SCFI हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज है। इसमें हमारे सभी एक्सपर्ट मेंबर का और जो व्यूअर्स यूट्यूब और फेसबुक पेज से के अग्रवाल से जुड़े स्वागत है। और आज हमने बहुत ही करंट टॉपिक जो इस समय आई थिंक सबसे ज्यादा लाइमलाइट में है आज के टाइम पे, उस टॉपिक को लिया है। टॉपिक जैसा कि सभी जानते हैं आप, बैन ऑन आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स इज स्टेप टुवर्ड्स रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन एंड हेल्थ इफेक्ट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक। तो ये टॉपिक हमने लिया, ये हमारे SCFI के सीनियर मैनेजमेंट में डिस्कस हुआ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, बिकॉज अभी 1 जुलाई से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वाइड जो बैन किया है सर्टेन आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक्स का, उसके ही इसी के कंटिन्यूएशन में उसी के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस पे वर्क करें, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को लिया। दो सिंगल यूज जो प्लास्टिक SUP गिव वेरी कन्वीनियंस इन डेली लाइफ स्टाइल बट दे आर मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, सभी जानते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, व्हाई इट इज वेरी डेंजरस टू एनवायरनमेंट, बिकॉज द ओपन बर्निंग ऑफ दीज प्लास्टिक वेस्ट जो इधर उधर थ्रू ढलाऊ के द्वारा कलेक्ट नहीं होता है, रोड साइड लिटरिंग एंड अदर डिफरेंट सोर्सेज से आता है, तो होती है। So including the choking of drains, sewage system, water body by this indiscriminate dumping of SUPs and the consumption of the जो plastic contaminated seafood and creation of जो harmful microplastics, or there are some reasons to phase out these single plastics. अभी हमारा टॉपिक में microplastic fragment of these plastics will be less than 2 to 5 millimeter. They great impact on human health. अभी हमें इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च की जरूरत है और इस पे अभी काफी जो है काम हो रहा है। It is estimated that there are already more than 1.5 million trillion of microplastic in our oceans. ये अभी एस्टिमेटेड है और इसका बहुत ही इंक्लूडिंग जो हमारी जो पेट बॉटल्स है और इसका भी इम्पैक्ट है, और बहुत सा जितना भी आप जो प्लास्टिक जा रहा है ओशन में, जो लैंड के थ्रू जा रहा है ओशन में, इसका बहुत बड़ा ये इसका इम्पैक्ट है। Therefore, the government of India has nationwide banned this identified single-use plastic products from 1st July 2022. That is about 19 SUPs in the first phase, including plastic plates, glass, cups, and there's various, these are 19, the SUPs are there. The government of India has started this mission in 99 by banning polythene. There were further number of amendments and the plastic rules also came 2016 by central government, also the various rules by state government to increase the thickness of these polythene bags. But net result is that in the last 2 decades, we were unable to eliminate one SUP. That is a very fact is there. That is this thin polythene bag. The reason may be poor enforcement, but main is that आवाज आ रही? हेलो, आवाज आ रही मेरी? Yes, sir. Yes. आ रही सर। The reason may be the reason may be poor enforcement, but the main reason is the socio-economic reason. We know that हम लोग तो बहुत से लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी में हैं, because the convenience and the cost of the जो alternatives of these polythene bags were not in the alternative as compared to the plastic bags. आप प्लास्टिक जो ये पॉलीथीन बैग्स हैं, जो इसकी कॉस्ट है, आप मार्केट में नो कॉस्ट, ऑलमोस्ट नो कॉस्ट पे मिलता है आपको, बट इफ यू दीज अल्टरनेटिव्स यू हैव टू पे द कॉस्ट। जो कन्वीनियंस रही इसकी, इसमें भी बहुत सा रीजन रहा कि हम उसको अल्टरनेटिव्स में वो प्रोवाइड नहीं कर पाए। देन व्हाई इट इज नेसेसरी टू हैव कन्वीनियंस कॉस्ट टू एक्टिव अल्टरनेटिव जो हम ला रहे हैं दीज in SUP to make the SUP in success.
अदरवाइज तो सिमिलर जो फिट हुआ है पॉलिथीन बैग का, बैन का, जो थिन पॉलिथीन बैग का, अगर हमारे जो कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे और इन्फोर्समेंट भी बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, तो शायद हम ये जो चीज जो अभी आज हम बात कर रहे थे नहीं हो पाएगा, और अल्टीमेटली एनवायरनमेंट में जो प्लास्टिक पोल्यूशन और माइक्रो प्लास्टिक का बढ़ता जाएगा। उसी पे आज हम डिस्कस करेंगे। और हमारे साथ सबसे पहले मेरे 2 कोलीग्स हैं, मैं उनसे स्टार्ट करूंगा। आई थिंक दे, अगर या तो प्रेजेंटेशन होगा उनका, वी कैन शेयर इट, और जो है इफ यू डायरेक्टली दे कैन। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले श्री अमित जैन जी, जो एमडी है, जो सीएमडी है आईआरजी सिस्टम से, और प्लास्टिक वेस्ट पोल्यूशन पे बहुत काम किया है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस में, और एक्सपर्ट है, ई वेस्ट पे बहुत काम किया है। और अमित जी से रिवर पोल्यूशन में भी प्लास्टिक पे जो वेस्ट पे काम किया है कि इसका क्या इम्पैक्ट है रिवर पोल्यूशन में। तो मैं स्टार्ट करूंगा सो अमित जैन जी से, एंड देन विल कम टू कमल शर्मा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज हमारे तो कमल शर्मा थोड़ा इंडस्ट्री परस्पेक्टिव में ये, बिकॉज ये वर्किंग वी केयर में और इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं कि उनके व्यू पॉइंट्स कैसे और इफेक्टिव करना है। एंड अमित जी टू ओवर फर्स्ट टू स्टार्ट अमित जैन जी। ओवर टू अमित जैन जी। अनम्यूट कर लें सर आप। नमस्कार। सबसे पहले मैं सबसे आपका अब सही हो गया सर? हेलो, आवाज आ रही है सर? मेरे को तो आ रहा है सब आवाज। वेरी क्लियर। हाँ सर, आवाज आ रही है सर आपकी। थोड़ा नेट का। हाँ, तो नमस्कार। और अब मैं जो हूँ, डॉक्टर अनिल ने वैसे भी सारा प्रेजेंटेटिव चीज से आपको अवगत करा दिया है और इन्फॉर्म कर दिया है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। फिर भी मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा आपको, और बताऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे प्रॉब्लम है, और इसके कुछ हेल्थ इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। एक ये शेयरिंग राइट्स हैं सर मेरे को? हाँ, आप हाँ कर सकिए। दिख रहा है मेरा स्क्रीन हाँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर दिख रहा है। ये कुछ साइट्स हैं जो कि मैं दिखाऊंगा कि कहाँ प्रॉब्लम कैसे ये डिस्कवर हुई। As you can see, the plastics is found everywhere. It started in 1950s जब ये मटेरियल डिस्कवर हुआ, और ये जो है धीरे धीरे इसका वाइड स्प्रेड यूज हुआ, जिसकी की वजह से वी आर ऑल फेसिंग अ प्रॉब्लम नाउ फॉर द लास्ट 50 years or 40 years। के बाद ये देखिए, ये ग्लोबल एस्टिमेट्स हैं कि जितनी भी प्लास्टिक्स है, ये जो है ये ऑनलैंड प्लास्टिक से रिवर के माध्यम से ये जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और सारा का सारा हमारे ओशंस में जा रहा है और सीज में जा रहा है, जिससे कि प्रॉब्लम ये दिखाई दी। क्यों? हमारे सीज और रिवर्स जो है मेजर फूड चेन का हिस्सा है, एंड फिश पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दैट on these seas and oceans for their livelihoods as well as for their food chain। अब आप एशिया में अगर देखेंगे तो हम ये आराम से देख सकते हैं, ब्लू जो डॉट्स हैं, यहाँ कोस्ट लाइन है और प्रॉब्लम यहाँ दिखाई दी। और क्या है, यहाँ से जितनी भी रिवर्स हैं ये ट्रांसपोर्ट कर लेती हैं सारा प्रॉब्लम। इसका नतीजा ये हुआ, जो 10 से ज्यादा रिवर्स दुनिया में आइडेंटिफाई की गई जो कि प्लास्टिक की कैरियर्स हैं, उसमें से इंडिया में काफी रिवर्स हैं, जिसमें कि गंगा मेजर रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स भी हैं। अब ये क्यों होता है? अब आप देखिए प्लास्टिक की कैसे प्रोड्यूस हुआ
कहाँ इसका वो हुआ, यूज हुआ, और कैसे ये डिस्पोज हुआ। अब आप देखिए, यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ये प्लास्टिक जो है यहाँ से बनना चालू हुआ, यानी कि हम अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्लास्टिक को बनाते हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद ये जो है हमारे यूसेज में आती है। यूसेज के बाद ये जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है, कहाँ डिस्पोज ऑफ किया जाता है, ये एक बड़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद हम ये भी देखते हैं इसमें कि रिसाइकलिंग होती है प्लास्टिक्स की, लेकिन एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, और सिंगल यूज प्लास्टिक्स उसमें कुछ ऐसे हैं कि जिनका कोई बिजनेस सेंस नहीं होता है उसको रिसाइकिल करने का, और ये जो है ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, कबाड़ी भी इन्हें नहीं उठाता है। और इसके बाद जो है ये जो है चेन में आ जाते हैं डिस्पोजल की। तो इसका इम्पैक्ट क्या है, हमने जब इसकी मटेरियल फ्लो चेन एस्टेब्लिश करी और देखा, इंडिया में कुछ स्टडीज हुई और कुछ रिवर्स में काम चालू है, जैसे कि गंगा रिवर में, कुछ शहरों में है, क्योंकि ये इतना बड़ा टारगेट है कि इसको एकदम से किसी कंक्लूजन पे आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये सब एस्टिमेट्स हैं। अभी तो प्रयास जारी है कि आखिर है कितना प्लास्टिक्स, आखिर जाता कितना प्लास्टिक्स है। तो सप्लाई चेन प्लास्टिक्स की देखी जाए, वैल्यू चेन देखी जाए, तो उसमें अगर हम देखें कहाँ से लीकेज है, तो देखिए लीकेज का इम्पैक्ट यहाँ आता है। ये सोर्सेज हैं हमारे अर्बन सेंटर्स, रूरल सेंटर्स, ये सब प्लास्टिक का सोर्स है, प्लास्टिक पोल्यूशन का। और ये कैरियर देखिए, यहाँ से कैरियर होके ये जो है डिफरेंट एरियाज में आया, ये हमारे मरीन इकोसिस्टम, रिवराइन इकोसिस्टम, सॉइल इकोसिस्टम, इन सबको पोल्यूट कर रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है कि देखिए, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, जियोग्राफिकली इसको देखें, तो ये इस तरीके से नजर आता है। तो इसमें ये है कि ये जो रेड डॉटेड लाइन है, जहाँ पे कंज्यूमर यूज और बिहेवियर एक मेजर फैक्टर है। इसके बाद हम ये सब जानते हैं कि कलेक्शन जो है इज ए मेजर प्रॉब्लम है, इट्स होता है, लेकिन कितना होता है, कहाँ होता है, क्यों नहीं होता, ये एवरीबडी नोज इन दिस ग्रुप एंड मोस्ट ऑफ देम आर अवेयर। उसके बाद रिसाइकलिंग होती है, उसके बाद जो है फाइनली जाता है, जब इसका कोई यूज नहीं होता है, इनटू डंप साइट। क्या हम डंप साइट पे जाने से पहले इसको रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, ये एक मेजर क्वेश्चन मार्क है हम लोगों की। अब इसका रेस्पॉन्स क्या रहा, हमारे रेगुलेशंस जो हैं उसको बात आई कि प्लास्टिक को बैन करना चाहिए। क्या हम वाकई में बैन करना चाहिए, इसकी यूटिलिटी भी बहुत है। अगर हम इसको मेडिकल फील्ड में देखें तो इसकी यूटिलिटी ऐसी है कि ये जो है रिप्लेस नहीं हो सकता किसी उससे। तो क्या करा, इसी तरह हम इसको कंट्रोल्ड यूज करें, तो रेगुलेशन आए। और रेगुलेशन की वजह से क्या हुआ, पहले पॉलिथीन बैग्स पे आए, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे होते होते ये आया, कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है इसमें ऐड होते गए। और 2016 में पहला रेगुलेशन इस तरीके का आया विच कवर्स मेजर क्लास। उसके बाद बैन और रिस्ट्रिक्शन आए, शुरू से ही बैन आए, धीरे 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 करके ये सब इसमें आइटम्स ऐड होते गए। अब ये हुआ, एक तरफ तो ये हुआ कि इस चेन का अगर एंड देखें तो हमने कंट्रोल करने की कोशिश करी, क्या हम इसको वैल्यू चेन के यूसेज पॉइंट से डिस्पोजल पॉइंट तक कंट्रोल करें, उसके लिए रेगुलेशन आ गए। हम लोगों को यह भी देखना चाहिए कि इसका बना कैसे और इसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, जिससे कि हम इसको जो है पूरा इसका लाइफ साइकिल अप्रोच लें। तो ये अप्रोच धीरे धीरे आ रही है। अब इस अप्रोच को वो करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट भी डिजाइन किए कि भाई सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि सब कुछ जो है एक तरफ उनको है, क्या हम कंबाइंड एफर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ, मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है। अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें, अगर आप ये देखें मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट में हम सब ने ये देखा है कि जब हम बचपन में कभी कोका कोला की बोतल खरीदते थे या क्रेट खरीदते थे, तो हमसे वो रखवा लिया करता था, एक जो बेचता था पैसे रखवा लिया करता था, और जब हम लोग
उसको पूरी तरीके से वापस करते थे बोतलें, तो उसका पैसा, ये एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो हमें इस तरीके के प्रोडक्ट्स डिजाइन करने पड़ेंगे जो कि मार्केट बेस्ड हो, कुछ रेवेन्यू जनरेट हो, कुछ इसकी की वजह से क्या हम इस तरीके के सपोर्ट दे सकते हैं, फंड्स जनरेट कर सकते हैं इस तरीके के सिंगल यूज प्लास्टिक पोल्यूशन से वो करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। क्योंकि इतने सारे शहर हैं, इतना सारा बड़ा रूरल एरिया है, हम लोगों को बड़े कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या है, जो हम कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, क्रीम हो गई, बाकी चीजें हो गई, उसमें एक तरीके से देखा जाए माइक्रोब्रीड्स का इस्तेमाल होता है। माइक्रोब्रीड्स कुछ नहीं होते, छोटे छोटे प्लास्टिक की बॉल्स होती हैं जो कि दिखने में बहुत छोटी होती हैं, हमें आंखों से नजर नहीं आई। और तीसरी बात ये हुई, क्या हम इसके जरिए ऑल्टरनेटिव मटेरियल्स कर सकते हैं? हमारी आदत छूट गई। देखिए, हम लोग बचपन में सब जो है कपड़े के बैग यूज करा करते थे। धीरे 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 यूज एंड डिस्पोज की पॉलिसी आई या एटीट्यूड चेंज हुआ, तो कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है उसको रखना शुरू कर दिया। और एक तरीके से ये देखा जाए, हमने प्लास्टिक बैग का बिल्कुल ही यूसेज करना बंद कर दिया। हमें अपनी आदतों को भी सुधारना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अब जब रेगुलेशन आए, जैसा कि डॉक्टर अनिल ने बताया, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक्स में ये होता है कि एक बार आपने यूज करा और उसको फेंक दिया। तो ये रेगुलेशन जब आए तो 1 जुलाई से मिनिस्ट्री ने, जो 2016 में रेगुलेशन आए थे, तो उसको जो है फर्दर मॉडिफाई करके 2021 में ड्राफ्ट रेगुलेशन आए। उसके बाद जो है उसमें अमेंडमेंट हुए। उसके बाद जो है 1 जुलाई से पूरी तरीके से बैन करने के लिए कह दिया। सरकार ने तो ये कह दिया, क्या ये संभव है जिसमें कि प्लास्टिक कप्स, प्लेट्स, ग्लासेस, कटलरी आइटम्स जैसे कि प्लास्टिक की फोर्क्स, स्पून्स, नाइफ्स, स्ट्रॉ, ट्रेज, रैपिंग पेपर, फिल्म, काफी चीजें इसमें कवर्ड हैं। जैसे कि बताया 19 चीजें कवर्ड हैं, तो इसमें 19 चीजें कवर्ड हैं इन आइटम्स में। इसके लिए हमें एक तरीके का सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें कि सबकी भागीदारी होगी, नॉट ओनली द पब्लिक बट ऑल्सो द डिफरेंट stakeholders like producers, like collectors, इनफॉर्मल सेक्टर ऑल्सो, जो कि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ भी है और वीकनेस भी है। हमें उनको भी सशक्त करना पड़ेगा कि वो, उनके लिए ये तरीका एक तरीके से मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, उनकी लाइवलीहुड ना पे फर्क पड़े। देखिए, जैसे माइक्रोबीट सर ने बताया, 5 मिलीमीटर और उससे कम साइज के आइटम माइक्रोबीट्स होते हैं। दिखने में अगर हम नंगी आंख से देखें तो इस तरीके का नजर आता है। अब जब जाता है पूरे सिस्टम में तो ये पोल्यूट करता है, वाटर पोल्यूशन भी करता है, एयर पोल्यूशन भी करता है, सॉइल पोल्यूशन भी करता है। उसके बाद जब ये फूड चेन के द्वारा हमारी हेल्थ में जाता है, उसमें जाता है, खाने में जाता है, तो ये हमारी हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करता है। कहने का मतलब ये है, अब ये कॉमन सॉल्ट में भी दिखने लगा, रिसर्च कहती है। रिसर्च ये भी कहती है कि हमारे ह्यूमन ब्लड में भी दिखने लगा। तो फिर कहाँ कहाँ नीड है ये? इट इज ऑमनी प्रेजेंट, इट इज ऑमनी प्रेजेंट एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। इसके ये हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स जो है इम्पैक्ट होंगे इससे। अभी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन आगे आने वाले 20 साल में हम इसका इम्पैक्ट दे सकते हैं। इसका मतलब हमारे रेगुलेशन को अमेंड करना पड़ेगा, वाटर रेगुलेशन को अमेंड करना पड़ेगा, एयर क्वालिटी के हमारे नॉर्म्स बदलने पड़ेंगे, एयर पोल्यूशन इम्पैक्ट करना पड़ेगा, हमारे सॉइल का पोल्यूशन भी देखना पड़ेगा कि सॉइल में कितनी गहराई तक है ये, और जो आइटम्स, जो ऑर्गेनिजम्स हमारी सॉइल की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं, वो तो अपटेक नहीं कर रहे इसको। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अभी भी, और इसके ऊपर रिसर्च अभी जारी है। हमारे कंट्री में अभी तक जो मैंने देखा है, माइक्रोप्लास्टिक्स के ऊपर कुछ सैंपल्स हैं रिवर्स के, लेकिन इसको एक तरीके का मूवमेंट बनाना पड़ेगा सो दैट ईच एंड एवरी स्टेट
get their water bodies evaluated from the perspective of microplastics. और ये भी मैं बता दूं कि हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इतनी कैपेसिटी है और कैपेबिलिटी है कि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें और इसको एनालाइज कर सकें। दूसरे देशों में बहुत से देश ऐसे हैं जैसे उनमें ये कैपेसिटी और कैपेबिलिटी नहीं है। सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारी जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो अवेयर कितना है और उनका कितना इंटरेस्ट है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। यही मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग अपने रेगुलेशन से कंप्लाई करें जितना हो सकता है। मैं जानता हूँ एकदम से नहीं हो सकता, पर ये ग्रेजुअल अप्रोच है। हम कहते हैं 3R हो गए, 4R हो गए, आगे हो गए, लेकिन पहले हम ये तो करें, रिड्यूस करें अपना कंजम्पशन और रिसाइकिल करें, कहाँ तक हम उसको रिसाइकिल करें और कितना हम रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद हम रिसोर्स एफिशिएंसी पे जाएं। क्या हम आइटम अपस्ट्रीम साइड में चेन में हम करें या उसका ऑल्टरनेट मटेरियल निकालें? क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा? ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या हम सर्कुलरिटी, जो आइटम रिसाइक्लेबल है, उनको वापस ला सकते हैं अपनी इस चेन में? 3R इंस्टीट्यूशनलाइज करके क्या हम वापस ले आए? इसके लिए हमें क्या करना होगा? ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम अवेयरनेस करें तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। आप विश्वास नहीं मानेंगे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में और यूनेप के द्वारा डिफरेंट कैंपेन्स हम लोगों ने चलाए और उसके अंदर स्कूल के बच्चों को बहुत ट्रेन किया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि स्कूल के बच्चों ने अपने घर में जितना भी इस तरीके का कचरा है वो वापस स्कूल लाए और उनको किस तरीके से चेन में वापस डालना चाहिए, सेग्रीगेट करना चाहिए, और गीला कचरा और सूखे कचरे में ये आता है, कहाँ इसको डालना चाहिए, कैसे उसको देना चाहिए। एक तरीके से कलेक्शन की काफी तगड़ी हम लोगों ने कोशिश करी और उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आए। इसको मास स्केल पे हमें ले जाना है मूवमेंट को और इसको एक शेप देनी है, लेकिन इस सब के साथ साथ हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना है साथ साथ, जो म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करे और वापस जो है हम जो है इसको रेस्पॉन्सिबली एक तरीके से इसको मैनेज कर सकते। यही मैं कहूँगा और ये मेरा एंड ऑफ प्रेजेंटेशन है। थैंक यू। थैंक यू अमित जी। आई थिंक स्टॉप कर दे एक बार। हाँ यार, सो थैंक यू वेरी मच अमित जी फॉर वेरी वेरी डिटेल प्रेजेंटेशन ऑन द सब्जेक्ट। और आपने पूरा कवर किया इसका इम्पैक्ट, इसके क्या रेगुलेशंस हैं और क्या इसके अल्टरनेटिव्स हमें करना चाहिए और गवर्नमेंट को किस डायरेक्शन में अवेयरनेस बहुत डिटेल में कवर किया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दी डिटेल प्रेजेंटेशन ऑन सब्जेक्ट। नाउ आई विल जस्ट कम टू, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कमल शर्मा जो CEO हैं वीकेयर के, और कमल हमारे कोलीग भी रहे हैं डिपार्टमेंट में, हम हमारे साथ में रहे और देन ही ग्रोन अप इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और अभी ये CEO हैं वीकेयर में। और इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में ये भी कि इंडस्ट्री क्या किस डायरेक्शन में थिंक कर रही है और क्या उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड इससे रिलेटेड जो अदर इश्यू कवर करेंगे। सो ओवर टू कमल शर्मा। Thank you. Thank you, sir, for giving me this opportunity to be with some of the stalwarts in the environmental science community. And I would thank Amit ji also for very elaborate presentation. I have a few points and I will be just making some points for this group to refer. So we have to look at the way the regulations have been involved. I mean, the way our country is growing and the kind of its need, and accordingly, then we have to look at the what are the environmental implications of our growth. First is that yes, we are turning into a more and more consumerism-based society in terms of use and throw of a lot of products, and
plastics is a kind of a universal packaging option. It is not just food sector or any other specific you want to name, but across sector, we want, we go to any market, everything is packaged in plastics. So to start with, government has brought out, so there are two policy, roadways. One is that the introduction of extended producer responsibility, that you make the organizations who are using plastic as a packaging, them responsible for its take back. It's kind of it is in itself is a disincentivizing policy, because if I use plastics, I have to incur cost associated with its end of life. So that's why government softly introduces EPR to give a message that yes, we want the people who are, or the organizations who are using the plastic to take care of it. Second option is when we don't have any control of who is producing those plastic packaging. If we talk about plastic cutlery, these are all small scale producers. Even 50,000 rupees, one can buy a machine and be an entrepreneur in this area. So there is no way government would, regulate them. So the regulations were not applicable. So since this channel is subscribed by a lot of enthusiasts in the environment, so we have to look at, from the lens of what is that I can control and what is I cannot control. Where I can fix the responsibility, I can bring in EPR, and where I cannot fix the responsibility and it is just going haywire. So there we have to introduce a ban on those kind of materials. So this is the thought process through which we see two types of policy which are separated. I mean, EPR and ban are two separate policies. EPR for business continuity with responsibility of those organizations, and ban is just stopping of those kind of products. So government rightly listed out the kind of priority SUP items, and we know all that. It's been popularized by a lot of government departments, starting from MOEF, CPCB, various state pollution control board. And there is and what I personally see, there is a lot of regulatory actions which have started since February this year. Even though the ban is today, but CPCB has started working in February when they started giving the advisories to State Pollution Control Board on how, and also they need to report. So it is going to be a very tough thing for all those kind of entrepreneurs or manufacturers who are into this SUP items business. Now, having said that, we have to look at as a citizen of this country, as a citizen of this earth, that where I am using the earth resources in a more intensive manner. If I replace plastic, there are scientific studies, LCAs, which has been done, which have proved that even if when I replace plastics with any other packaging, whether it's aluminum, whether it's glass, whether it's paper, I am going to increase my environmental intensity of my being on this earth, because I am using those products which are very environmentally intensive. They may find it that we are reusing it, but their cost of production, their environmental impacts of production also needs to be taken into that. Do we have that much of paper available with us? From where this paper would come? So those are the things that, and yes, industry in itself is working towards sustainable packaging, where they would be introducing some kind of, how they can reduce the packaging size, how they can, make lesser plastic content into the packaging. So that is what industry is doing. But if our thought process is like we would replace plastic, it is not going to happen, and that is not good for environment. So that is one. Secondly, this is the second point, and the third is on the part of. I'll take one point and then I'll come back to the ban. These days we are talking microplastics.
what we see in ocean also, the great plastic patch, what we see, it is not basically, you wouldn't find plastic as floating. It is basically microplastic, which is floating as a scum under the sea level, and one can observe it from satellite pictures as well. So that is where, and in the oceans, about 80% of the plastics is coming from shipping industry. So is there any regulation for shipping industry? We are using and recycling plastic and making cloths out of it. We are making fibers out of it. If I am wearing a fiber, it is bound to wear and tear. Where that microplastics, which is going to suspend in the air because of that using clothing. So is there any study? No study. So that is where we also need to look at packaging in itself. Yes, one of the major user of plastic, but from where these all microplastics are being coming, we have to look at and act upon. Until unless we do that, we would be just beating the bush. So, and now coming back to the ban again, we are in the 2nd of July, and the way rules were written is that manufacture, use, or sell these SUP are banned from 1st July. Now there are questions coming from industry, because if manufacturing was allowed till 30th June, there must have been some transition phase. So for example, from 1st of July, industry switches to the other option. Okay, but what happens to the other to the products which are manufactured prior to 30th June? Because वो market में तो रहेंगे, supply chain बहुत लंबी रहती है, products 3 से 6 महीने तक हो सकता है दुकान पर पड़ा हो, but क्या उसका मतलब ये है कि वहां जाके ULB का बंदा उसको जाके फाइन कर देगा? So somewhere this also needs to be clarified, that this applicability of the ban would be measured or would be ensured by the regulator on ground. कि भाई आप उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखो, अगर 30 जून से पहले का है, डोंट push these things, but अगर 1st July का है, then act very severely on it. So, but these things are missing. Now, what we are hearing from ground, from market, is that there is a chaos. People are so the big food chain or the malls, they are at a very they are seeing this as a risk, that because the products are there, the regulator can come and it can sue them. So somewhere this kind of if this kind of directions can come from regulator, it would be really helpful. But as far as BCARE and its members are concerned, most of the members have already planned for switching to other alternatives wherever there was any impact. Although our members are not into majority into SUP, but there are some parts which are connected. So they have already looked at the alternatives. But जब से ये रेगुलेशन आया था और तब से अब तक इंडस्ट्री ने काफी R&D भी किया कि उसको पेपर बेस को कैसे लेना है, उसको मशीन में डालेंगे तो सक्सेस होगा नहीं होगा, तो उसमें भी टाइम गया है. सो इट इज नॉट दैट कि अभी हम बोले कि ये तो बहुत पहले से बताया गया था, अभी का क्यों नहीं किया, बट वो उस समय ऑल्टरनेटिव नहीं थे, उसको टाइम लगा है ऑल्टरनेटिव्स बनने में. नाउ वी हैव ऑल्टरनेटिव, इंडस्ट्री इज स्विचिंग ओवर, but some kind of buffer time also needs to be there for the markets. The markets, I would say that, okay, if it is manufactured before 30th of June, it can be considered as being complied. But after 1st of July or after 30th of June, there is no leniency. So these are my perspective. And other important issue that we all need to look at for a futuristic perspective is the compostability and biodegradability. The rules are recognizing compostable products, but there are other products who claim biodegradable. They have they have got the standards. I mean, they also comply with the USTM standards and other standards. But somewhere we also need to bring biodegradability into, because there could be some applications where biodegradable plastics may find it suitable. So that is these are the top of the mind important points that I would like to refer to the esteemed.
Thank you so much, Kamal, for giving industry perspective in this, particularly this subject, into the details. How to have very effective ban, whatever happened in last 2 decades of the banning of the thin polythene, not very successful. So we have to learn from the past, and we have to accordingly plan for with all the stakeholders for future the effective ban and the this 19 SUP, or then for second phase maybe more that. So thank you again, Kamal. So now I'll request with our sir, the second, I think, chairman of the CPCB, Sri, our mentor, our guru in the group, Parthos Tyagi sir, to have the comments on the particularly in today's subject. Over to Tyagi sir. सर आप अनम्यूट कर लें 2 मिनट सर. I would first like to compliment both Mr. Amit Jain and Mr. Kamal Sharma for having said things in a manner that a common man can understand it very easily, and making very sensible points. I have very little to say because they have given authentic and detailed information. But what I really am worried about is that recently I read that microplastics can be carriers for virus, and thereby they can make their life cycle much longer than viruses don't last in environment for long. But these carriers enable them to live longer. To what extent is that true, and what is the amount of risk because of that? That is something I would like to understand. Second is, it's a general remark that regulations are not enforced. Now, enforcers, pollution control boards, for example, are enforcers. So they get the blame very easily. But the question is whether the regulations are enforceable. When the Supreme Court made a law that any cracker which produces more than this much of sound, and anybody who uses it is punishable, tell me how this is going to be enforced. When there is so many crackers already blaring out, how can one find that Mr. X has used a cracker which violates the law? So that way, I think somewhere the regulations are really not enforceable. Second is that you make the manufacturer responsible, seller responsible, purchaser responsible, user responsible. Everybody is responsible. Therefore, nobody is responsible. Why don't you go at the source? If the thing does not come in the market, that means if it is not produced, where will be the purchaser? Where will be the user? Where will be the others? So the whole thing should be concentrated on the manufacturer. Whether the manufacturer is of this type of plastic or that type of plastic, or whether it has to be biodegradable alone, or whatever it is, but concentrate on manufacture, which is easily identified, which can be controlled much better than the user, which might be a child as far as a cracker is concerned, or which might be a laborer as far as plastic is concerned. So that way, I think there is good reason for finding out whether what we give out for enforcement is really in a shape that it can be enforced. Lawmaking is not in the hands of these enforcing agencies in most cases, and I think that is an important thing. Then there has been an idea which has been told sometimes regarding the producer's extended responsibility, which worked very well as far as the batteries are concerned, lead acid batteries. But whether such an idea or a modification of it can be applied here also, so that one thing is assured, that after the whole thing has been used in its life cycle, it is a built-in arrangement that it will reach safe hands for safe handling, treatment, and disposal. Because it is at the end of disposal where it is done irresponsibly
or inadequately. So these are a few things that occurred to my mind, and I thought I will mention them. And I also want to know from the experts whether biodegradable plastic is strong enough in most cases to take the load that many of the plastics are now taking, whether they are with respect to compression or whether they are with respect to some other stress or abrasion or whatever. So are the biodegradables in a position to replace the non-biodegradable in performing the functions that they are performing? That's about all. Thank you very much for thank you, sir. Thank continuing you very to much, giving sir. me honor. Yeah, thank you so much, sir. Some of the thing definitely very well that with the particularly the EPR definitely is what should be the workable with the like for lead acid battery and should be planned for the other products. Can it be make workable? Another thing important sir, you said the biodegradable plastics. Very, very important subject. Another issue of debate that sometimes the corn-based biocompostable plastic or so maybe another for the food security because the corn is being used for our food products. Agar if you take that products for the making this kind of plastic and things like so another issue for debate. We should be switched to that kind of products or another thing the test of biodegradability. Once you take the sample, you go for testing. Sometime for compostable you need 6 months to test that actually the compostable or not. The test method, the rapid test method is not there for it to check the biodegradability. I mean, this is the questions to enforcement for its agencies also. So they are very, very important point you raised, sir. Definitely, these are the things to be debated, and then further the government can take a decision for the. Already, I think some cases already taken, but definitely need to be checked. So thank you again, sir. Now I'll request Deepankar Sahaji to say some because we have 15-20 minutes. So I'll request first Deepankar Sahaji, then Pradeep Khandelwal ji, then Dr. Sanjeev Agarwal ji. Over to Deepankar Sahaji. Thank you. Very serious, sensitive, and comfort issues because we all are struggling for comfort. Banning the plastic is a blow to our comforts. This is the thing what I feel. As far as the regulation is concerned, 2003 notified it with regulation 20 micron. Then it came 40 micron, now 50 micron, and all these things. What I found is that without awareness and necessary infrastructure, we have created and kept on banning all these things. And I was not in favor of banning anything. Never. Because it's a raw material. It gives such a value. But value, as far as the raw material is concerned for production of various materials, there is no hindrance. Manufacturing, no hindrance, easily available. Suppliers, it is easily available and no hindrance. At the consumer end, once we consume, then it becomes a problem. And we are so carelessly dumped, carelessly used, and haphazardly used without any rationality to a material, because of its cost, it is very cheap. And we never wanted to carry a load of bag, though it is of in grams, still we never wanted to replace or the thing. That is the result of indiscriminate users and throwing up all these things. Had the citizens be rational, logical, and have the understanding about the environmental hazards and our infrastructure, our environmental componental hazards, probably we could have reduced something before banning the thing. But what I found, another thing is that we are talking of the replacement, and we are suggesting the thing go for cooler. Cooler vapor preparation is more carbon intensive.
and it requires the topsoil. One hand we need to go for the protection of the soil. Other hand we are talking about the cooler for the cooler. So I do not understand. It's personal. Personally, I don't understand where to start and from where this logics comes. Cooler is also a single use. Lot of carbon is done, used. Lot of carbon footprints. And it is the major thing is that it requires the topsoil. When the topsoil is required, that means our food production will be at stake. So as our Anilji also told, biodegradable plastic means maize is required, and it's the problematic. So where to go and where to stand and where to stop? This is really a dilemma. I would suggest the speakers note. Awareness is the key. Rational use is the key. Segregation is the key. We cannot avoid all these things. Once we are able to follow the rule, discard, reuse, and replace, keep it in the proper place, it will not going to be a success. I'm not raising any question mark. It's a very good thing that the ministry, CPCB, State Pollution Control Board, they have opened the control room. And now all the control rooms are opening in all city level. In DMs have been made responsible. Subdivisional magistrates have been responsible. And the control rooms, it is all the time, it is monitored with who is doing, what is doing, from where it is coming, and all these things are coming. So hopefully, this will spread the awareness. And that was required from the very beginning of our law. Thank you so much for giving me the opportunity. Thank you so much. Thank you, Shah Sahab. Thank you so much for your views, and have a balance with the whatever you want to ban or what the for reuse. Now I'll request Pradeep Khandelwal ji to particularly the municipality perspective. He can particularly he was in for more than 2 decades in the municipality. So I'll request Pradeep Khandelwal ji. So the particularly ban of the SUP, what the municipality say in that part. So over to Pradeep Khandelwal ji. Good afternoon to all. As I earlier said, everything comes only on municipalities. Irrespective, they have the resources or not. So, though we were working on banning of the single-use plastic since 2018, but I don't know where is the gap. So we're not able to even ban even 1% of total use. If you remember that in 2018, when Prime Minister announced on 5th June World Environment Day to ban the single-use plastic, Secretary MOEF issued a letter in October 2018 to all the government departments, at least stop using plastic bottles. But still, the government, even government departments are using the same. So there is a gap between understanding, planning, mode of implementation, and monitoring. So in everywhere there is a gap. So unless until we plug that gap, we will not able to achieve the target. Irrespective, we do lot of efforts, and you don't believe that when I was in service, I was regularly organizing the awareness campaigns, the collection system. We, with the help of IPCA, have collected so many plastic and stop this thing, single-use plastic, use of single-use plastic from the mandis, from markets, and this thing. The only thing is we will keep
carrying on the awareness campaign, helping the people. One day they start doing it. The cloth bags, we distributed enough cloth bags in East Delhi, but still there is a no sizable result in the East Delhi. So I think we will keep on doing the awareness, keep on forcing the, unless until we stop the manufacturing of these items, we will not able to achieve that target. Thank you. Thank you, Pradeep. Thank you so much for your views, and definitely the role of the municipality along with the regulators and the all stakeholders, industry and all other stakeholders, very, very important to work together in this, particularly to make it a success. So now I'll request Dr. Sanjeev Agrawal to say a few words. Then I think finally we'll request to Vivek ji, or anybody is there. I think first is Dr. Sanjeev Agrawal ji. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah. I will start with that 1980s when the Supreme Court has given the order in 13029, where that water pollution, air pollution, and MC Mehta case, and solid waste pollution. Actually, I have indeed I have dealt I think more than 15-20 years, and submitting to affidavit to the courts, Supreme Court, High Court, and NGT. So what I found that a lot of plastics are coming to the landfill sites. So basically, I restrict only 2 points, very important. We have done everything. We have done the enforcement. We have done the laws, rules, everything, but we could not get any success. So what I now feel, we have to now think differently. We have to act differently. We have to, as somebody has mentioned already, that behavioral change. We have to also see that whether these kind of plastics, how can we stop? It can be quantified very easily because all municipalities are having these kind of things, and it can be also quantified at the source level where they are manufactured. So CPCB has done a lot of exercise. CPCB has done even maybe the quantification might have done. So we have done a lot of things. So what I feel that two very important things. I heard Amit Jain Saab, and I heard Kamal Sharma ji, I heard Dr. Saha and Dr. Tyagi ji. Basically, the awareness should come on the top. Awareness should come on the top. As I remember, when I have attended one of the campaign in Sarhanpur public hearing, where that they have asked me to speak about the solid waste, means plastic waste. So what I informed them, what I told them very firstly, that we must get it aware that the harmful effect of the human being of plastics. So basically, जो पहले के जमाने में थैला हम लेके जाते थे मार्केट में, वो थैला आजकल basically it is nothing but a phthalic acid. So plastic is a derivative of phthalic acid, and phthalic acid is a highly carcinogenic. So basically, this we have to aware the public, saying that this is highly harmful. Like corona, people have a fear that corona ho jayega. So why not to make in such a way that awareness that the harmful effects to the human being, because ultimately all the plastics, basically it is become a plastic ocean. Ocean has become a plastic ocean. So ultimately everything goes to the ocean. So that is why our Honorable Prime Minister has also started saying that the plastic pollution in oceans. So we found that a lot of ponds, lakes, rivers, everything, everywhere, even soil, every places, every metrics has been dumped with plastics. So there is one more thing, that awareness. Second is that research and development. So research and development is already there. So plastics, basically a lot of research has been done, and then some of the bacteria has been grown up to degrade the plastics. So basically it needs a coordination. So in the world over, all the research has been done.
some labs have developed the few kinds of bacteria which can degrade easily the plastics, and we used about that. The third thing is a very harmful effect. So I think these three things are very important: awareness, and secondly that quantification we can do it, and thirdly that harmful effects of the plastics. So I think still we have to think in differently, because we have rules, law, everything we have, and we are not able to control it. Like river pollution, the same thing is happening in plastic. So I think this is very important to now think differently, instead of saying that single-use plastic maybe I think it's good, but it cannot be controlled like this. So thank you very much for giving me opportunity. Thanks. Thank you, Dr. Sanjeev Agrawal. Now we have just about to going to 1 o'clock. So I'll request the S.K. Gupta ji for just 2 minutes, and then we can request Vivek ji to have his views and the vote of thanks today. S.K. Gupta ji. Yeah. Thank you, Dr. Saab, and good afternoon to everybody. मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए, और ये तो सालों से चल रहा है कि प्लास्टिक खराब है, प्लास्टिक नुकसान देते हैं। किसको नहीं मालूम कि प्लास्टिक नुकसान दे रहे हैं। बहुत साल पहले जब नालियाँ चौक हो जाती थी तो लोग कहते थे कि प्लास्टिक की वजह से हमारी सारी नालियाँ चौक हो रही हैं, तो प्लास्टिक का यूज बंद कर देना चाहिए। लेकिन ये है कि आदमी बाय नेचर इज वेरी ग्रीडी और ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ होती है, और एक तरफ तो साइंटिस्ट और इंजीनियर जो है नए नए प्रोडक्ट डेवलप करते रहेंगे और ये हमेशा होता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। और दूसरी तरफ इंडस्ट्री जो है ऐसे सामान बनाती रहेगी जिससे उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता रहे, मैक्सिमम फायदा होता रहे। लेकिन जो एक ग्रुप होता है सोसाइटी के अंदर वॉचडॉग का, जैसे एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं आजकल की तारीख में, उनका ये फर्ज होता है कि वो ये बताते रहें कि कौन से प्रोडक्ट को अडॉप्ट करने से नुकसान होगा, क्या तो एनवायरनमेंट को नुकसान होगा, या हमारी हेल्थ को नुकसान होगा, या हमारी प्लांट एंड वेजिटेशन को नुकसान होगा। इसीलिए शायद वो इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी वगैरह कराते रहते हैं। तो हम लोगों का यही फर्ज है कि ये बताते रहें कि भाई कौन सी चीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। डेवलपमेंट तो चीज़ों की होती रहेगी, और मैन्युफैक्चरर्स भी अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए उसको बनाते रहेंगे। इस चीज़ को रोकना बहुत मुश्किल होगा, किसी रेगुलेशन से नहीं रुकेगा। ये सिर्फ एक ही चीज़ से रुक सकता है, जिसको बार बार कहा जा रहा है अवेयरनेस अवेयरनेस। अवेयरनेस भी बहुत हो रही है, नुकसान का भी पता है लोगों को, लेकिन जो एक चीज़ है, जो एक इस तरह का एक ग्रुप या जो हमारे लोग पॉलिसी मेकर भी हैं, वो भी हमारे बीच में से ही हैं। कोई वो वी और दे वाली पॉलिसी तो है नहीं कि वो दूसरे हैं और हम कोई अलग हैं, हम सबके लिए हैं। तो हमें ये अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट करती रहनी चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ें हमारे लिए हार्मफुल हैं, किन्हें हमें अडॉप्ट करना चाहिए अपने यूज़ के लिए, और किन्हें हमें अडॉप्ट नहीं करना चाहिए अपने यूज़ के लिए। बस हमें इतना ही अगर ज्ञान होता रहे, और इस तरह के जो आज जो सेमिनार हुआ है, वर्कशॉप हुआ है, इसमें बहुत सारा ज्ञान मिला है कि भाई कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ खराब है। तो अगर यही अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में लोगों तक पहुंचती रहे, तो लोग अपने आप ही जो चीज़ खराब होगी अपने आप छोड़ देंगे उसको, और कोई रेगुलेशन से ये कंट्रोल नहीं होंगी। और रेगुलेशन से अगर कंट्रोल करनी हो तो जैसा त्यागी साहब ने कहा कि इसको जड़ से खत्म करना चाहिए, मैन्युफैक्चर ही उसका बंद कर देना चाहिए। जो चीज़ बनेगी नहीं तो ऑब्वियसली वो बिकेगी नहीं, यूज में नहीं आएगी, लोगों के बीच में फैलेगी नहीं। तो मुझे तो यही फिर कहना है कि भाई जब भी हमें अकल आ जाए तभी अच्छा, देर आए दुरुस्त आए। धन्यवाद। थैंक यू Gupta, thank you so much. Now I'll finally request our trustee to SCFI, Vivek Kumar ji, for his views on the subject, and also the proposed vote of thanks to all the speakers today. Over to Vivek Kumar ji. As time is short, namaskar and thank you to all the distinguished guests for participating today. I'd like to thank Tyagi ji especially because of his wide experience and always regularly joining our program and sharing his experience. I'd like to thank Amit Jain ji and thank Mr. Kamal Sharma for sharing their views today on the subject. I would like to thank Mr. Deepankar Saha, Pradeep Khandelwal ji and Gupta ji for speaking on this subject.
And I would like to say that, see, this single-use plastic is something that, it has percolated down to the people of lower income. Hence, it's becoming more difficult to eliminate. But what we have to do is that, as very rightly put forward even by Dipankar Ji Saha, the top soil gets eroded in case we consume too much of terracotta kind of products, the pottery products, which is also a fact. And now we are having Sadhguru, who is creating awareness on saving the soil, which is also, of course, required. Hence, I feel like, many of our organizations, we are moving towards alternatives wherever plastic is not required really to be used. To use alternative products is important. At the same time, biodegradable plastic is also important to use. However, I feel, as it was discussed in the forum, I think the doctors' involvement is going to become more essential, where the doctors need to come forward, the medical doctors, and create awareness among the people that, as we had created awareness on COVID, what are the harmful effects of plastic? Because you see, plastic is creating slow death in people, while COVID was creating immediate death. So there was a different kind of a fear among people. Now, unless there is a fear of disposal on plastic and its carcinogenic values, which is leading to cancer and leading to organ failure, especially kidney, and affecting the liver. Once we create this awareness and the fear among people, that's the only thing we can do. This is the way where the people have started smoking less. People have started consuming pan masala, etc. lesser. But you cannot 100% stop it. But if we create the awareness, probably that will help better. And that's the only way to go forward. With this, I would like to say thank you, because already most of the points have already been put forward and discussed by everyone. And thank you for joining the Sunday Forum. Thank you. Thank you. Thank you, Vivek Ji. Thank you all. They were expert member of the Dr. KK SCFI. And this was, I think we have covered most of the point we wanted to cover. But last में यही कहूँगा कि कोई भी alternatives अगर हम जाते हैं after banning of this 19 जो SUP और further अगर हम करते हैं, तो convenience and the cost effective of the alternatives हमें देखनी चाहिए, और environment पे लिए हजार ना हो. अगर हम एक alternative दूसरा को, अगर हम एक की जगह दूसरे को उसका रखते हैं alternative का, तो it should not be, जैसे विवेक जी ने बताया और शाह साहब ने बताया, और भी कोई इस तरह का कोई ऐसा alternative हम ना लेके आए. कमल जी बताया कि अगर कोई ऐसा हमें एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, तो आई थिंक वी हैव टू वर्क टुगेदर, और अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट. इसीलिए डॉक्टर के अग्रवाल जी का यही था कि अवेयरनेस से, और जो भी हमारे लोगों के सबसे मिलके जो पब्लिक हेल्थ और एनवायरमेंट को सब्जेक्ट उनका जो फोकस था, इसीलिए था कि दोनों चीज़ें एक साथ हैं, दोनों का इम्पैक्ट है. अगर सराउंडिंग एनवायरमेंट अच्छा है तो हमारी हेल्थ ठीक है. इसी के लिए वो करते रहे और लास्ट तक यही सबके लोगों की सेवा करते रहे. इसीलिए डॉक्टर के SCFI इसी सब्जेक्ट में इस तरह से काम करती रहेगी आप सबके सहयोग से. और आप सबका ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और हम फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे. इसी के साथ सबका, सारे एक्सपर्ट का, और जो ज्वाइन करिए आगे देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक पे, के अग्रवाल पेज पे, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.